come around to say hello. One-on-one, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you, it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. Hello, Moto. ऐसे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। जब कल अतीक अहमद की मैंने नाम लिया, अतीक अहमद पर मैंने बात किया, आपराधिक अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद पे बात किया, इसलिए मुझे पार्टी से उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। समाजवादी पार्टी ने अपना असली पीडीए विरोधी, दलित विरोधी चेहरा बता दिया। Good evening, ladies and gentlemen. On the 16th of April 2023, Atiq Ahmed, one of India's most dreaded gangster politicians, was shot dead live on television, marking the end of his 4-decade-long reign of terror. With his end came closure for Pooja Pal. Her husband, Raju Pal, had been avenged. 18 years ago, Raju Pal, a newly elected MLA of the BSP, was brutally shot dead just 9 days after his marriage. Doctors found 19 bullets in his bullet-ridden body. Pal was eliminated because he had dared to challenge Atiq on his own turf. He had defeated Atiq's brother Ashraf by a mere 4,000 votes. Today, Pooja Pal credited Uttar Pradesh Chief Minister for seeing her tears that no one had noticed for nearly 2 decades and reducing mafia to dust. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। Pooja Pal was speaking in the UP Assembly in her capacity as an MLA during a discussion on Vision 2047 document, UP Assembly's first ever 24-hour debate, coinciding with Partition Horrors Remembrance Day. Speaking on the occasion, Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, blamed the Congress leadership's lust for power and appeasement for tearing India apart. He also took on the Samajwadi Party, redefining its PDA slogan. और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। So who qualifies to be part of Akhilesh Yadav's parivar? At least not Pooja Pal anymore. The MLA from the Samajwadi Party, within hours of committing the crime of praising Yogi Adityanath, was expelled. A letter signed by Akhilesh Yadav declared her guilty of anti-party activities and indiscipline, due to which he claims his party has suffered a lot. How does a political party suffer if there is crackdown on crime and mafia? How is it indiscipline if a legislator says she appreciates a crime-free state? And where is Akhilesh Yadav's PDA when it comes to sacking a backward class leader? What is the formula that forms the guiding principle for Samajwadi parties? Questions that many are asked. मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, जब से उसको मिट्टी में मिला
आ गया। मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। Viewers, let me decode the Samajwadi Party's formula. It is simply called in one word, appeasement. Forget Pichda, forget Dalit or Alpsankyak, which the PDA is supposed to stand for, because when it comes to the big M factor, everything else goes out of the window and out of the party. That's the same compulsion that once had Mulayam Singh Yadav shaking hands with Atiq Ahmed's dog, and the same compulsion that has the Yadav Parivar paying homage to Mukhtar Ansari. Plain and simple vote bank compulsion. समाजवादी पार्टी